Hey, so let's look at what happened in the morning and in my what I commented yesterday on my post market. So my post market plan was if it cap ups, I will look for selling opportunities. If it cap downs, I'll look for buying opportunities. It opened flat, so as it was not in my plan, I did not trade in the first half. So if you're looking at say buying opportunity after this fall, which was basically I was expecting to buy, but was expecting a gap down. So Bank Nifty from open went almost 400 500 points. Nifty from open almost 1200 points, and you see a lot of volumes. Not always assigned to buy, but you can always take that risk, especially on expiry days. Hero is kind of a hero zero. So I did not do this. So looking at it as a spectator, if you see so I won't really comment on the bottom part, very hard to catch. But if you're looking at the top for today, especially in both Bank Nifty and Nifty, it is basically in Bank Nifty, you can probably see it is around these levels, right? So you see fall yesterday, some volumes, and you see kind of a volume being made at those in that zone, and a fall. Very easy to create these boxes after post market. That is the reason I'm saying I did not trade. So yep, coming back to Nifty, this was the fall. If you watch my post market, you know what these boxes are. So this was the fall where it started, where it almost ended yesterday. That is basically the box, and Nifty is still in the bottom part of this box, and it even closed below that box level, yesterday's low. Yep. So did not trade this. What did I trade today? Gave a trade, a very easy and simple trade, which was even after all this noise, this worked. The trade was basically if 2 o'clock is at VWAP, I will look for a sell below 2, stop loss too high. Gave this on my social channels. You can check this out if you want to. And stop loss was day high, not day high, it's 2 o'clock high or 145 high. So the trigger here is what 565, high stop loss is 98, so almost 30 points, 30 plus points. And the target, I had mentioned two targets. One was this can be a scalp trade because of the expiry, or this could go and break low. It almost came near lows. 460 was the low, 470 was the low, and it almost came around 490 levels. So very good trade, almost 70 point trade, 1:2 kind of a trade. Did not trade Bank Nifty, only took this trade in second half when my system trade came. So yep, what is my plan for tomorrow? Again, expecting a gap down. If it gap downs, I will look for buying opportunity. If it doesn't gap down, I will not. I'll wait for some time and see what is happening. But I'm expecting today's low to at least break, and it probably can go more. But I think I will, though I would love to buy on a gap down, but I'll wait for opportunities. This is not an opportunity for me, where there's like 400 point fall and 400 point up in 30 minutes. I would rather let it calm down a bit and then see what is happening. When I say calm down, it means consolidate a bit and then take a trade. So as I said, I did not trade till 2 o'clock. Very hard to resist on an expiry day, but yep, that was a plan. So yeah, we'll wait. Yes, tomorrow's plan is wait for if it gaps down, I look for buying opportunities. No plan on gap up or when it opens flat. बैंक निफ्टी का देखते हैं. मेरा कल का पोस्ट मार्केट अगर आपने देखा तो मैंने बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गैप डाउन. अगर गैप डाउन होता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, गैप अप होता है तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा. मार्केट फ्लैट खोला, ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, तो मैंने ट्रेड नहीं किया सुबह. लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप मेरे प्लान को अगर आप देखते भी कि गैप डाउन नहीं भी हुआ तो ये गिरा 400-500 पॉइंट, और यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम्स आई दोनों में. जहाँ से ये ऊपर आया है वो भी एक अच्छा जोन है बाय करने का, स्पेशली एक्सपायरी में हीरो ज़ीरो. और एक और अच्छा जोन है अगर आप एज ए स्पेक्टेटर पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तो सारे अच्छे जोन ही होते हैं. लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो ये भी कल का यहाँ से ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स आई थी,
ये वॉल्यूम कैंडल है। तो मैंने जैसे आपको बोला 3 मिनट तो मैं सिर्फ वॉल्यूम्स के लिए देखता हूँ। तो ये वॉल्यूम कैंडल जो आया था और यहाँ से ही फिर से विवैप किया है, विवैप रिटेस्ट किया, वही 300 पॉइंट्स है ऑन एक्सपायरी डे। और निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी कल का जो ये बॉक्स है, आपको पता है ये बॉक्स क्या है, ये बेसिकली बॉक्सेस ये होते हैं, येलो बॉक्स होता है मेरा जब मार्केट जहाँ से गिरा है और जहाँ मार्केट का डे लो, और जब गिरा है तो अच्छे वॉल्यूम से गिरा है। और ब्लू बॉक्सेस होते हैं बाइंग के लिए। तो ये येलो बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये लोअर एंड में ही था ये, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये भी सेल करने का, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सुबह मुझे एक ट्रेड आया था जो मैंने शेयर किया अपने सोशल चैनल पे, ट्रेडिंग व्यू में नहीं शेयर करता मैं अब, 2 o'clock पे, कि ट्रेड था कि 2 o'clock के नीचे मुझे सेल करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 2 o'clock का हाई या 145 का है, विच एवर इज़ हायर। तो 145 का है यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए वो स्टॉप लॉस था। स्टॉप ट्रिगर था 565, स्टॉप लॉस था 595, 598, और टारगेट आया ऑलमोस्ट 493। मैंने 2 टारगेट दिए थे, एक तो स्कैल्प क्योंकि एक्सपायरी था, और सॉरी एक स्कैल्प क्योंकि एक्सपायरी था, और दूसरा मैंने बोला था कि ये लो तोड़ सकता है। ये ऑलमोस्ट आ गया था लो के पास 490। एक्सपायरी के दिन में ऑलमोस्ट 2 o'clock के बाद जब प्रीमियम इतने लो होते हैं तब ये ट्रेड चला है। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट जगह 80 पॉइंट जगह गया है 1:2। तो ये ट्रेड लिया था बस मैंने, और कोई ट्रेड किया नहीं। अब कल मैं क्या कर रहा हूँ, गैप डाउन का वेट कर रहा हूँ। अगर गैप डाउन हुआ तो बाइंग करूँगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं गैप अप में सेल नहीं कर रहा और साइडवेज में सेल नहीं कर रहा, वेट करूँगा। कल फ्राइडे और है तो मैं वीकली क्लोजिंग होगी तो देखूँगा क्या करना है। अभी के लिए और कुछ नहीं। थैंक यू।